तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप सब कैसे हो? मैं फाइनली आ गया हूँ फिर से तुम्हारे सामने हॉगवर्ट्स लेगेसी का एक नया पार्ट लेके, बट आफ्टर 1 मंथ। सॉरी गाइस, बहुत ही बिजी था, एकदम टाइम नहीं हो पा रहा था बेसिकली मेरे को। और क्या बोलोगे, कि अच्छा वॉक थ्रू हो रहा था और अचानक से इतना काम का प्रेशर बढ़ गया कि टाइम ही नहीं हो पाया। एक एक टाइम सोचता हूँ रात के टाइम करूँ, बट ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, थोड़ा टायर्ड हो जाता हूँ इसीलिए। तो बेसिकली आज संडे है, फ्री हूँ, तो सोचा चलो गाइस हॉगवर्ट्स का फिलहाल पार्ट कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे, अभी तो मेरा प्लान है कि फिर से इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद एक नया गेम पे आना, क्योंकि 1 मंथ पूरा ब्रेक हो गया है इस चैनल को। आई थिंक चैनल थोड़ा डाउन भी हो जाएगा। चलो जो भी हो, थोड़ा सब्सक्राइबर भी हमारा लेस हो गया है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइस अभी तो मेरा प्लान है फिलहाल पुराने टाइम पे फिर से बैक करना। आई मीन जो रात के टाइम में करता था, 10 बजे से 12:30 बजे या फिर 1 बजे फिर से कंटिन्यू करने का प्लान है, क्योंकि समर आ ही गया है, गर्मी पड़ गया है, तो आई थिंक और प्रॉब्लम नहीं होगा। और सुबह का टाइम में कोशिश करूँगा, अगर फ्री हो तो ज़रूर लाइव स्ट्रीम करूँगा। पर अभी के लिए तो फिलहाल आज संडे है, तो चलो आज मेरा प्लान है कि हॉगवर्ट्स को पूरा फिक्स करना, जितना हो सके लेके जाना, ताकि अपकमिंग गेम हम आ पाए। और ऊपर से थोड़ा साइड गेम भी खेल रहा हूँ, इसीलिए हो नहीं पाया। चलो जो भी हो, तो गाइस आई एम बैक आफ्टर 1 मंथ। तो आज हम खेलेंगे बेसिकली हॉगवर्ट्स लेगेसी का पार्ट 9। तो जो भी देख रहा है अभी, आई थिंक थ्री वाचिंग, वेरी वेरी मच थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। इतना दिन बाद आया हूँ गाइस। अरे हाय ब्रो, व्हाट्सअप, बहुत दिन बाद आया हूँ। सो गाइस, तो पसंद आए लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो गाइस, फाइव वॉचिंग, बहुत ही बढ़िया। चलो गाइस, एक साथ आज हम फिर से खेलेंगे हॉगवर्ट्स लेगेसी और मज़ा लेंगे और मैजिकल वर्ल्ड को। पर बाय द वे, सच बात बोलूं तो मैं पूरा कंट्रोल वगैरह सब कुछ भूल गया। अच्छा, सेकंड मॉनिटर पे। हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रो, हाउ आर यू? बहुत दिन बाद आए होगा ब्रो। 8 वॉचिंग, बहुत ही बढ़िया। 6 लाइक, मस्त भाई। तो फिलहाल तो मेरा आज ट्राई है कि गुड, वेरी नाइस ब्रो। तुम लाइव स्ट्रीम करते हो क्या, या आप ही वीडियो वगैरह डालते हो चैनल में? तुम्हारा चैनल, मेरा सब्सक्राइबर है, तुम्हारा वीडियो कंटेंट तो बहुत ही अच्छा है भाई, हॉरर थीम का जो है, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो गाइस, आई एम बैक। मैजिकल वर्ल्ड हमारा हॉगवर्ट्स पे फाइनली मैं आ गया हूँ। पर सच बात बोलूँ तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मेरा कंट्रोल वगैरह। 10-20 मिनट खेलने के बाद आई थिंक इससे बैक हो जाएगा हमारा पुराना वाला कंट्रोल। पर बाय द वे, जो भी हो, अभी तो फिलहाल हम, मेरा पूरा फोकस है मेन स्टोरी पे जाना, क्योंकि इसका बहुत ही वक्त तो निकल गया है। 9 पार्ट, मेरा प्लान है इसको 10 to 12 पे ख़त्म कर देना। मैंने बहुत कुछ किया था लास्ट टाइम में, बहुत असाइनमेंट वगैरह किया था, तो अभी तो मेरा प्लान है फिलहाल मेन स्टोरी को फोकस करना और जल्दी से इस गेम को ख़त्म करना, क्योंकि एक न्यू गेम पे आना चाहता हूँ। क्योंकि जब इससे बैक हुआ हूँ, पुराना गेम को जल्दी ख़त्म करने का ही प्लान है। बाय द वे, जो भी हो, चलो शुरू करते हैं हमारा मेन स्टोरी से। बैक ऑन द पार्थ, गो टू मैप चेम्बर। ओके, असाइनमेंट पे फ्लिपेंट अनलॉक होगा, पर उससे पहले हमको ये वाला सब करना पड़ेगा। हार्वेस्ट फ्लक्स और ऑल थ्री कॉम्बैट प्लांट यूज द स्ट्रेस। ये हमको हार्वेस्ट करना होगा, ये भी हमको करना होगा। तो अभी के लिए तो चलो एकदम शुरू करते हैं मेन स्टोरी से, कि थोड़ा मेन स्टोरी का। प्रो, आर यू प्लेइंग पीसी और पीएस? भाई मैं पीसी में खेलता हूँ, प्लेइंग इन पीसी। भाई तो ये झंडा कहाँ से लेता है, मैं भूल गया हूँ। Protego! अच्छा, इधर से मैच Revelio! रिवेलियो, ये सच में भूल गया हूँ, झंडा कहाँ से ले। Protego! Revelio! ये ऐसा ही होता है, अगर 1 मंथ
एक मास 1 मंथ बाद अगर कोई गेम शुरू करो तो। अच्छा 20 है, चलो। नहीं, हमारा तो एक नया गेस्ट आया है, तो चलो उसको ट्राई करेंगे आज। लेट्स गो। Faster, High Wing! हम दौड़ भी सकते हैं Away, और High उड़ Wing! भी सकते Away! हैं। चलो शुरू तो करेंगे फिलहाल। अच्छा पीसी। यस ब्रो। तुम भी पीसी में खेलते हो? तो चलो शुरू तो करेंगे फिलहाल। लास्ट वाला पार्ट वक्त थ्रू में जो अनलॉक किया था, जो अभी लेके खेल रहा हूँ मैं थोड़ा स्टोरी के अंदर घुसना चाहता हूँ, क्योंकि याद तो है हाफ पार्ट हमने खत्म किया था, पर अगर थोड़ा और भी घुस जाए तो और भी। उसके बाद साइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिलहाल लॉन्ग स्ट्रीम का प्लान है, बस पावर कट का इशू मत ना हो। तो गाइस सोच रहा हूँ फिर से ईटीएस और एटीएस का जो रात का स्ट्रीम होता था वो फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ हमारा वीडियो वॉक थ्रू भी आउट करेंगे, तो अपकमिंग होगा। तो मैप से बढ़ जाना है ना, मैप से बढ़ जाना है। तो इसका मार्क इधर क्यों दिखा रहा है? थिंक हॉगवर्ट्स के अंदर से जाना था। I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's चलो scriptorium. सेबस, आई My हैव efforts ओनली were in लैपटॉप vain. नॉट। ओके। Meet me outside the Slytherin common room. बाय द We वे need गुड, to talk. तुम लैपटॉप से भी तुम्हारा जो मैंने चैनल का कंटेंट देखा गेम प्ले का, बहुत ही सही लगा हॉरर का। बाय द वे अभी कंटिन्यू करते हो क्या? तो चलो एक काम करते हैं फिलहाल, अंदर जाते हैं। मैप से एक बार मेरे को जितना याद है अंडरग्राउंड पे दिखा रहा है, आई थिंक हॉक्समैन अंदर से ही गया था। मैप नंबर तो हॉक्समैन के अंदर का एक सीक्रेट डोर जितना मेरे को याद है उधर से गए थे। चलो के लिए तो फिलहाल ये पूरा अंडरग्राउंड शो कर रहा है मेरे को। फाइन कैश चल जाके फायदा नहीं। मेरा 6700 XT है एमडी का, आई मीन राइजन एमडी, और इंटेल i5 11 जेन है, और उसके साथ 16 GB रैम और 1 TB SSD। भाई सब कुछ भूल गया और क्या बोलूं। Wizardry is in the map. I should speak with him about recent event. अच्छा मैप चेम्बर, ओके एक मिनट। मैप चेम्बर उसी अनलॉक होगा भाई। वेस्टर्न का रिक्वेस्ट तो करना ही है। तुम्हारा लैपटॉप का स्पेस क्या है? चलो पहले इधर जाते हैं। चलो मार्च हो गया, बहुत ही बढ़िया। भाई तो इधर एक फास्ट ट्रैवल पॉइंट है। पता नहीं कितना दूर जाना है मैप चेम्बर, रास्ता ही भूल गया भाई। गेम थोड़ा शटर हो रहा है। थिएटर भी फिर से फ्रेश डाउनलोड हुआ। I heard that someone cast a thunderstorm on Jordan's portrait, but they couldn't answer. अरे जैक्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो ब्रदर। यस ब्रदर, व्हाट्सअप। I'd hate Transfiguration if it wasn't for Weasley. She definitely takes the fear out of it, and that's saying something. I asked Amit Takar to tutor me in Transfiguration, but he refused. I'm a lost cause. I should think there's an entire फाइनली आ गया, हाँ भाई फाइनली आ गया।
चलो मैप चेम्बर का रास्ता तो भाई मिल गया, बहुत ही बढ़िया। चलो बाय द वे मेरा प्लान है आज का स्ट्रीम में बेसिकली इस स्टोरी का तो बहुत ही एंड तक जाना। देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं। आई थिंक मेरे को जितना लास्ट टाइम याद है जब मैं इस गेम का फर्स्ट रिलीज का टाइम खेला था, तो अब मैप चेम्बर का जब ये जो प्रोफेसर है पुराना वाला सब अनलॉक होने के बाद बेसिकली गेम का एंड का बेसिकली सिचुएशन में आ जाते हैं हम। पर अभी के लिए तो फिलहाल आई थिंक नंबर 3 या फिर 2 अनलॉक होगा, मेरे को जितने याद हो रहा है। अच्छा 2 अनलॉक हो गया है, ये बहुत ही सही है भाई, You पूरा would be हॉगवर्ट्स का wise मैप। not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. चलो I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be भाई trusted? कंटिन्यू कर, अरे भाई हाँ मैं कंटिन्यू करने का पूरा प्लान है इस बेसिकली। हाँ भाई टाइम नहीं हो रहा था, थोड़ा काम का प्रेशर हो गया था। और बाय द वे आज आ गया हूँ संडे, तो प्लान तो है इसके बाद कंटिन्यू करना रात का जो स्ट्रीम में करता था पहले, ईटीएस को वो भी करना 12:30 तक। ज़रूर गाइस, तुमने जब बोला कोशिश तो ज़रूर मैं करूँगा। बाय द वे क्या बोला मैंने सुना नहीं। I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, एकदम evidently भाई। your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My और कितना पार्ट आएगा, descendant, कितना है a शूट, dark wizard. बोलना थोड़ा मुश्किल है I'm मेरे को, afraid we've जितने no time याद to है, पर waste. कह सकते हो आई थिंक Despite गेम the का obstacles that clearly await you, 50-60% you must प्रोग्रेस get तो to आई थिंक हो Rookwood गया Castle मेन स्टोरी immediately. का। Not चलो देखते हैं आज only कितना is कर it the पाते हैं। location of the next मेरा trial, प्लान है पार्ट it 10 is में home खत्म to a करना source of इसका मेन, power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the और luxury of जल्दी करना, time. लाइक 1 However, मंथ I do बाद बहुत ही not बढ़िया हो doubt your गया। abilities. गेम को खत्म Find my करके portrait there as नया soon गेम as you शुरू can. करने का प्लान है। Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. रॉकवर्ट कैसल के पास जाना होगा हमको, पर कुछ कांड होगा भाई साहब। ये वाला तो हो गया बेसिकली मेन स्टोरी का, वो तो हो गया। अभी हमको जल्दी जल्दी इधर से निकलना है, और 2 प्रोफेसर को हमको आना है। हाँ ये देखो चार्ल्स रॉकवुड का ट्रायल, ओके। तो अभी कौन सा करो यही सोच रहा हूँ, लूसियो का अनलॉक करूँ, सेबेस्टियन का। चलो अभी तो फिलहाल थोड़ा मेन को करते हैं, हाइट तो ज़रूर करेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी फिलहाल मेन को करते हैं, ओके। इधर से निकले कैसे वो भी भूल गया हूँ। अच्छा इधर से पूरा मेन पे जब घुसेंगे तब आएगा मौका। चलो आई थिंक वॉल मैप पे जाना सही होगा, अननोन प्लेस पे जाना होगा भाई, बहुत दूर।
मतलब हमने तो ऑलरेडी ट्रैवल करके रखा है, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स सी गाइस, लेट्स गो। Ah, how delightful. ये कहाँ पे आ गया? Protego! चल अभी तो फूटेगा तो नहीं बोला भाई, मैं एक बार फाइट तो करते हैं। Accio! जो भी था Incendio! You've made a great mistake. Stupid one! Accio! Confringo! चलो भाई, हो रहा है। Accio! Incendio! Confringo! Incendio! और कौन? Confringo! ऑयल पोशन मिल गया, बहुत बढ़िया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिकली। बाय द वे एल भी दबा के बी दबाना होता है, ओके चिंटा अनलॉक होता है। और जितना याद है, I should dismount here. अरे डिसमाउंट करना भूल गया। बी से डिसमाउंट, बहुत ही बढ़िया। चलो गाइस, सीधा मेन स्टोरी पे। प्रोफेसर भीगा आ गया, देखते हैं अब क्या होता है। What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. बाय द वे अभी जिस सीजन में आया हूँ इस गेम पे, एकदम सही सीजन पे आया हूँ। और भी मजा आएगा खेलने पे। बाय द वे रॉकवुड कैसल यही है, इसके अंदर अभी घुसना होगा। उसके बाद क्या सरप्राइज होगा वो देखना पड़ेगा। चलो आते ना आते गॉब्लिन भी आ गया। ये थोड़ा एडवांस गॉब्लिन लगता है भाई। Ah, up there. That's our way in. कौन सा? अच्छा Accio! Wingardium Leviosa! मीडियम लेवियोसो को यूज करके क्या हम उठ सकते हैं एक जैसे? चलो उठ गया, बहुत ही बढ़िया। If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here I only don't because know. you are Welcome to descended the from a stream, bro. keeper and may at Hi some bro, point hello brother, inadvertently what's become up? valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. You are back finally. Yes bro, I am back.
कोशिश करूँगा We जितना already स्ट्रीम knew कर they were सकूँ, after you, थोड़ा but now प्रेशर we आ know गया they're था digging अभी for काम का। stores of magic. And Ranrock और knows बाय about द the वे मेरा keepers. प्लान है अभी रात के Yes, टाइम I जैसे caught पुराना that टाइम too. 80s का स्ट्रीम या Professor फिर इसी Rookwood टाइप का said गेम that का you'd स्ट्रीम करना। understand more once you complete the next trial. आज Let's संडे get है, into that फ्री castle. हूँ एकदम, इसीलिए स्ट्रीम भी कर दिया हॉगवर्ट का। फिलहाल तो अभी हॉगवर्ट को खत्म करेंगे, अपकमिंग जो भी स्ट्रीम होगा फिलहाल प्लान है हॉगवर्ट को ही खेलना। उसके बाद नेक्स्ट गेम तुम्हारा रिक्वेस्ट का सीओडी का मेरा प्लान है, बाकी क्या खेल सकते हैं। Any special words you want me to pass on to your mum? You're really not very good at this, are you? Potato! Incendio! Confringo! Incendio! What are your thoughts on electricity? Confringo! I'm afraid of fire! Accio! Incendio! Confringo! Incendio! You'll regret it! Accio! Defendo! Incendio! Confringo! I've never seen such magic. Release me! Defendo! Incendio! Confringo! Accio! Incendio! Confringo! This doesn't hurt. What's the point of this? चलो ब्रो, अभी तक तो एकदम प्रॉब्लम नहीं हो रहा, अब एकदम हाथ पूरा बस गया है, अब आएगा मजा। चलो गाइस, कैसल के अंदर देखते हैं, इसके ऊपर जाना होगा, फिर उसको पहले एक बार देख लेते हैं आसपास किस वगैरह है। एक बढ़िया से पर मेरा गियर फुल हो गया। गियर स्लॉट में फिलहाल तो मैंने सब कुछ इपिक रखा है, भी रहने देते। इपिक में काम तो हो रहा है। देखते मिस्ट्री रॉकवुड कैसल में अभी क्या है, क्या छुपा है। ओ भाई साहब, I suppose that's the quick way down. इधर कुछ है। Confringo! बेसिकली ओके गाइस, 1 मिनट में, बस 5 मिनट में आया अभी, थोड़ा सा होल्ड कर लो। चलो तब तक एक बार देख लेते हैं, एक मिला दो मिला और एक आई थिंक और एक चाहिए, तो उसके बाद मे भी अनलॉक होगा ये डोर। और एक किधर है, मे भी इसके अंदर हो सकता है। हाँ, हमको 3 तो मिल गया। ओके गाइस, 10 मिनट या फिर 15 मिनट का ब्रेक में अभी आता हूँ, इसलिए गेम को इधर ही रुक रहा हूँ, बीआर भी नहीं डाल रहा हूँ। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लो, मैं भी आया बस। Is there something to those symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession.
हेलो गाइस, आई एम बैक। मैं आ गया हूँ। सॉरी, थोड़ा क्या बताऊँ, ठंडी का टाइम भी कम पड़ गया था। पर चलो जो भी हो, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी गाइस। Confringo! तो पहले मारो, उसके बाद इसको मारो, उसके बाद हो गया अभी। ओके गाइस, चलो। रॉकवुड कैसल तो फाइनली ओपन हो गया। रॉकवुड सेलर के अंदर घुसना है हमको, तो बाद देखेंगे क्या होता है। Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. इधर गॉब्लिन, भाई साहब ये क्या है भाई? This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. अच्छा, It looks empty. If प्रोफेसर they've taken रैनरॉक all का of पावर है, it, why are they still here? यहाँ पर Ranrock स्टोर है said there's बेसिकली। more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? हमको एक पोर्ट्रेट ढूंढना होगा पहले, पावर को रिस्टोर करने के लिए। और गॉब्लिन है, उससे पहले हमको लेना होगा, जैसे कि प्रोफेसर किंग ने बोला। I heard something. I was hoping that was you. ये तो प्रोफेसर रॉकवुड, चार्ल्स रॉकवुड मिल गया हमको। Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they ब्रो know फाइनली you हो were गया। a हाँ भाई, keeper. आई एम फाइनली Ranrock used the बैक। term. This आ makes गया no हूँ। तो sense. अभी How प्लान did... है वही We पुराना shall टाइम discuss पे this स्पेंड later. करना, रात के Right टाइम। now, you must complete the next trial. तो बेसिकली क्या है, टाइम नहीं हो रहा, थोड़ा काम का प्रेशर था, इसलिए एक 1 मंथ स्ट्रीम नहीं कर पाए। तो फ्री भी था, थोड़ा टायर्ड फील हुआ, कर नहीं पाया। एक टाइम सोचता था कि रात के टाइम करूँगा, बट बाय द वे आई एम बैक। अभी तो फिलहाल प्लान तो है हफ्ते में डेली ना हो पाए, एटलीस्ट 2 और 3 डेज या फिर 4 डेज, जितना हो सके स्ट्रीम करने का मेरा प्लान है। रात का वही पुराना वाला टाइम 10 बजे से 1 बजे तक जो स्ट्रीम करते थे, चिल लाइव स्ट्रीम ईटीएस और एटीएस, वो भी करने का प्लान है। क्योंकि विंटर तो भाई चला गया और क्या ही बोले, फिर से गर्मी आ गई जो मेरे को एकदम पसंद नहीं है। बाय द वे जो भी हो, अभी तो फिलहाल हॉगवर्ट्स को ख़त्म करने का प्लान है। बहुत दिन से वॉक थ्रू चल रहा है, ऊपर से 1 मंथ का गैप भी हो गया। तो बेसिकली प्लान है कि इसको जल्दी-जल्दी ख़त्म करना, उसके बाद एक फिर से एक नया वॉक थ्रू या फिर वीडियो जो भी हो, वीडियो वॉक थ्रू लेके आना। तो अभी पार्ट 9 आज फिलहाल फोकस है स्टोरी के, बहुत ही एंड लाइन पे जाना। देखते हैं कितना दूर हो पाए। ओके गाइस, चलो मैं तो भाई रेडी हूँ। Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. चार्ल्स रॉकवुड फिलहाल हमको गाइड करेगा। इतना आसानी से तो मेरे को नहीं लगता कि होगा। आई थिंक I will फाइटिंग join you वगैरह if तो I श्योर could. होगा। I shall await your arrival in the map chamber. ये मेरे को द सेकंड ट्रायल हो गया। देखते हैं सेकंड ट्रायल में अब क्या होगा। उसके बाद और 2 ट्रायल बाकी है। भाई बहुत ही सुंदर ट्रायल रूम, पिछले वाला भी बहुत सही था, ये वाला भी बहुत। बेसिकली सेम टाइप का लुकिंग है,
थोड़ा डिपेंड तो है भाई। अभी हमको करना क्या होगा? Revelio. हम तो इधर से आए हैं, ये वाला तो नहीं खुलेगा। अच्छा, साइड पे एक रास्ता है लगता है। नहीं, तो चलो, ये बेसिकली पुराना वाला ट्रायल जैसा हो गया। हाँ नहीं, एक Confringo. Incendio. Defendo. ये बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है लूमोस से अनलॉक हो। पर बाय द वे चलो अभी हमको करना होगा डुपल। Repulsor. नहीं होता तो लेके जाना पड़ेगा। अब लेके कैसे जाओ? Levioso. Accio. अच्छा समझा, पहले तो हल्का है, भी आई थिंक लेके जा सकते हैं। हल्का Repulsor. ऐसा हार्ड भाई पूरा Levioso. इधर लेके आ। नहीं हो रहा Repulsor. ये इतना ड्रॉप हो रहा है और क्या बोल हम करते रुको। Accio. Wingardium Leviosa. एक्यो रिगार्ड अरे अरे क्यों? Accio. Wingardium Leviosa. चलो वो आप कर रहे हैं। इधर एक लिस्ट भी है। अब हमको जाना है इधर। क्या क्या Accio. क्या Wingardium Leviosa. दोनों को तो एक साथ नहीं ले जा सकते तो देखते हैं। चलो आना इधर भी आसपास कुछ है एक्टिव करने को। That
pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio! तो कौन सा पावर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, Levioso! ये सब भी नहीं। तो हमको पहले हटाना होगा, तो हटाए क्या? Capulso! Levioso! Confringo! आई थिंक इसका मे बी फ्लिपेंड से हो जाता है। फ्लिपेंड तो मेरे पास अभी लॉक है। इसको कैसे हटाई हुई है मेरा प्लान। बेसिकली घर जब जा रहा हूँ तो तब एक काम कर, इधर से बेसिकली पाथ ही ब्लॉक है। तो मेरे को यूज करना होगा, बट समझ में नहीं आ रहा कि यूज कौन सा करूँ। Protego! डिपेंडो से तो नहीं हुआ, एक काम करके रुक, ग्लेशियर स्ट्राइकर वाला मैजिक स्किल तो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया। ग्लेशियर आई डोंट थिंक कि होगा, ग्लेशियर नहीं होगा। मे बी वो पाथ उसको खोलेगा, उसके बाद हमको ये लेना होगा। इसके अंदर से घुस के आता नहीं, अभी भी लॉक है। Capulso! Glacius! Capulso! Levioso! Depulso! Accio! हम तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा भाई। एक मिनट, मेरे फोन को एक बार चार्ज दे दो। मिनट गाइस, भाई अगर कोई किसको कोई आइडिया है तो मेरे को कमेंट पे बताओ। एक एक टाइम ऐसा पजल दे देता है ना, पूरा फंस जाता हूँ। तो अगर किसी को ने किया हो भाई, केच तुमने तो किया है, बताओ। तो बेसिकली ये वाला भी लॉक हो, अच्छा एक मिनट, आइडिया है, Accio! यही बोल रहा था। तो उठेगा तो नहीं, Wingardium Leviosa! हाँ यही बोल रहा था। ओके आ जाओ आ जाओ। लेबियो को यूज तो कर लिया, अच्छा तो आई डोंट थिंक मैं उठ सकता हूँ, तो नहीं होगा। और में भी कुछ है, Accio! Wingardium Leviosa! के ऊपर कुछ करना होगा मुझे। Accio! नहीं हो रहा। Capulso! Glacius!
अच्छा आइडिया है, इधर तो उठने का एक आइडिया है। Accio. Wingardium Leviosa. भाई साहब ये तो पूरा बाहर लेके जा रहा है। आई डोंट थिंक कि इधर कोई ऑप्शन है। तो इसके ऊपर जाने का भी मे बी कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर कुछ नहीं तो लगता कि है वैसे। बट जो भी है इधर कुछ अच्छा ये बात है। चल इसको लेके आता है मैंने। Accio. Wingardium इतना Leviosa. टाइम भाई मैंने जस्ट वेस्ट किया, मतलब हो जाएगा भाई। एक सिंपल सा टास्क मेरे को इतना टाइम लिया और क्या बोलूं, ये तुमने बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब पूरा फाइट होगा। चलो बड़ा फाइट होगा। Accio. Defender. Potato. Stupefy. Confringo. Incendio. पूरा Depulso. Glacius. Expelliarmus. ओ भाई बस हो ही गया। Expelliarmus. Stupefy. Expelliarmus. Potato. Stupefy. Glacius. Depulso. Expelliarmus. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Defender. Confringo. Incendio. Leviosa. Glacius. Depulso. Expelliarmus. ओ भाई साहब, Leviosa. चलो भाई तो अभी उड़। Protego. Defender. एक साथ दो स्लॉट पूरा गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, खेलते खेलते हो जाए, नो प्रॉब्लम। नो इश्यू एट ऑल। I believe I need to proceed to the left here, but how? हमको लेट में लेके आना है, और उसको सच में लेके कैसे आना है। जब जब यूज करता हूँ तो ये बिल्कुल इधर घूमता है। तो बाद अगर इस तरफ से इधर आ रहा है तो मे बी इधर ट्राई करके देखते हैं। अभी भी इधर ही जा रहा है। अगर इधर से हम करें तो क्या होगा, एक ये तो बेसिकली लॉक है। तो अभी हम इधर से भी जाए तो इधर ही आएगा।
घूम फिर के इधर ही आ रहा है भाई। और मैं अगर इधर भी जाऊँ, मेरा नहीं हो रहा। Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. The bridges appear and disappear depending upon which side of the archway I'm on. तो बेसिकली उस साइड मेरे को जाना था। चलो हो गया फाइनल। भाई इतना कंफ्यूजन था और क्या बोलूं। बाय द वे जो सोचा था हो गया। चलो देखते हैं इसके बाद अब क्या होगा। आ गया है हमारा फिर से क्यों लेबियोसो से भी काम नहीं होगा। सिंगल है। ये देखते कितना हार्ड है। There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Levioso! Accio! अभी भी एक्यो नहीं होगा। ये आया है लगता है। Defender! Confringo! Glacius! Expelliarmus! Depulso! Accio! Incendio! ऊपर तो एक्यो काम नहीं करता। Defender! Protego! हमको बेसिकली वो जो बॉक्स है। अरे भाई साहब ये कौन है? इनविजिबल है। देखो आई थिंक बाहर से ये देखो। Accio! Incendio! Defender! Confringo! Glacius! तब अब दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो भाई सिंगल खुल गया। इस सिचुएशन में इसको मारूंगा। एक काम करते पहले देखते एक काम होता है तो लेके इधर घुस गया। Hitting those marks readjusts the archway. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Really? Defender! Confringo! Incendio! Glacius! Expelliarmus!
Levioso! Convulso! Accio! Wingardium Leviosa! Is it possible to pull one of those blocks through the archway? अभी तो नहीं होगा। उल्टा हो गया। अच्छा हमको इसके ऊपर जाना है बेसिकली। मैंने गलती कर दी है। इधर इधर लेके आना है। Accio! Wingardium Leviosa! अरे देखते सिंगल से होता है या नहीं। After pulling आई the डोंट block थिंक out कि through the सिंगल से archway, होगा। I ओके can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. ओके हो गया, पर ये उल्टा करना है बेसिकली। तुम इधर से जाओ तो ये बेसिकली इधर की तरह है। तो ये सिंगल हो गया एक में। अब मैं भी देखते ट्राई कर। नहीं अभी भी नहीं होगा क्योंकि मैंने गलती कर दी। तो पहले अब करके देख। तो पहले घुमाना पड़ेगा, उसके बाद अभी भी सिंगल हो गया। और अगर मैं इनविजिबल होके जाऊँ तो देख, आई डोंट थिंक ये काम करेगा। मैं इसके ऊपर भी, हाँ ऊपर तो जा सकता नहीं। काम करके देख सकते हैं। अगर मैं उस डिमेंशन पे जाऊँ तो बेसिकली होगा कि ना होगा वो एक बार देखना पड़ेगा। पर आई डोंट थिंक कि मैं उधर से इसको इधर लेके आ सकूँ जैसे अभी दिख रहा है।
काम करते रुको, इसको पहले इधर लेके आ। Accio. Wingardium Leviosa. और इधर आने के बाद ये बेसिकली बड़ा हो गया। अब हो जाएगा लगता है। ओके Accio. Wingardium Leviosa. चलो गाइस फाइनली डन। आई डोंट थिंक ये होगा। नहीं हो गया। अरे भाई इधर से दिख रहा है, ब्लू साइकिल पे नहीं हो। ओह भाई साहब, बहुत ही कम सीजन पर देख बस सर हिल जाता है भाई मेरे को करने पे एक एक काम करते पहले इसको इधर लेके आते। इधर लेके आके भी कुछ फायदा नहीं। Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. चलो गाइस फाइनली हो गया। हाँ फाइनली ओके। अब हमको ऊपर से बेसिकली इसको रोटेट करना है भाई। एक एक टाइम पजल में इतना कॉन्फ्यूज हो जाता है और क्या बोल। चलो तो सही है पर जम करके जा सकते हैं ना। हाँ इसलिए मैंने पूरा क्या बताऊं भाई साहब। अब क्या हो रहा है? इधर भी फाइट होगा लगता है। हाँ पता था। इधर भी कुछ है। क्या लगता है गाइस किससे पजल ना दे। Accio. Defender. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Defender. डिफेंडो के साथ ग्लेशियस में बहुत ही बढ़िया कॉम्बो। इधर भी कुछ है पर उससे पहले इधर एक बार जाके Protego. बाय द वे मेन पॉइंट किधर है? इधर और इधर। क्या बाहर जाने का रास्ता? फाइनल फेज में आ गए हम। Defender. Protego. Stupefy. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Defender. Glacius. Confringo. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Defender. मर गया क्या? Glacius. Confringo. चलो गाइस फाइनल बॉस। Protego. Stupefy.
ओ भाई Confringo, Defender. Stupefy. Incendio. Stupefy. ओ भाई साहब ये मैं हर बार मिस कर रहा हूँ। Defender. Incendio. Confringo. इंसेंडियो भाई इधर से Expelliarmus. Confringo. Stupefy. Defender. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Defender. Confringo. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Glacius. Defender. Incendio. Confringo. अरे भाई Glacius. Expelliarmus. ये तो काम भी नहीं करेगा। Defender. Potato. Stupefy. Confringo. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Stupefy. Incendio. Confringo. Stupefy. Defender. Potato. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Defender. Confringo. Incendio. Confringo. Potato. Stupefy. Defender. Stupefy. ओ भाई Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Stupefy. Potato. Stupefy. Defender. Confringo. Stupefy. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Defender. चलो फाइनली गॉन। अरे भाई बहुत कुछ भाई मिस कर रहा हूँ मैं इसके What a लिए स्लॉट की वजह से। चलो कोई बात नहीं। इधर एक टेस्ट है ये भी मिस होगा। चलो कुछ सामान हटा के देखते हैं फिलहाल। तो बस सामान तो देखो भाई बेसिकली कुछ भी नहीं है। तो एक बार देखते क्या देता है। दिया तो दिया टट्टी सामान ही दिया।
must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always.
We shall speak again soon. चलो गाइस अभी तो फिलहाल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेस्ट सेबास्टियन का। बाय द वे हॉगवर्ट्स पे अब ऑटम से डायरेक्टली विंटर आ गया। मैंने सोचा था स्प्रिंग सीजन है मे पर नहीं, ऑटम सीजन था, अब विंटर आ गया। कोजी विंटर वाइब गाइस, लेट्स गो। अरे भाई ये क्या हो गया, आग हो गया अलग। चलो अब तीसरा ट्रायल हमको करना है, पर उससे पहले हमको थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करना है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा हमारा न्यू प्रोफेसर जी को। हाँ तो चलो। About your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. ये सबके साथ मीटअप करेंगे पर पहले सेबास्टियन का क्वेस्ट करेंगे। ओके। फायर एंड वाइस मीट कॉपी शूटिंग। अभी तो डिपेंडो अनलॉक करना होगा, वीडियो को अनलॉक करते हैं। इसलिए हमको कहाँ पे जाना? इन द शैडो ऑफ द स्टार्टिंग मीट सेबास्टियन आउटसाइड द C13 कॉमन रूम। ओके आई थिंक ये वाला है। हाँ इन द शैडो देयर फास्ट ट्रैवल पॉइंट पे क्लोज में बेसिकली ये वाला है। I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. चलो बॉम्बार्डा अनलॉक होगा गाइस, और इससे पहले सेबास्टियन फर्स्ट देन बॉम्बार्डा जो भी हो। सेबास्टियन You're का here. ये क्वेस्ट बहुत सही है। Brilliant. अच्छा हाँ, अभी तक मेरे को भी बहुत सही लगी थी जब शुरू किया I था। received your owl. What happened with Ominous? देखते I हैं एंड told तक him क्या none of us होता will है। be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt's knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. तुमने कुछ मिस कर अच्छा ऊपर है। What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact,
She'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Incendio! Confringo! That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Hello, Hamora. Incendio. ओपन कैसे करूं? Confringo. Confringo. Something's happening. I hope we're ready for this. Wingardium Leviosa. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the A voice journal I hear. entry, signed by Noctua Gaunt. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards.
I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. स्नेक के साथ बात कर सकते हैं। It worked. Ominous. और अब You हम क्या possess a बोलते हैं, rare उसको सुनाई ability देता है indeed. बेसिकली। Between the two of you, I'm starting तो to आप feel left उसके साथ out. बात भी कर सकते हैं। Between बहुत the ही two बढ़िया। of us? Never mind. There's no clear way ये देखो forward. स्नेक। Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. This journal entry, it mentions getting ये lost हमको and being लूमोस की unwelcome. जरूरत है। The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. भाई अब निकले कैसे? First of all, That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Lumos. फायदा ये तो भाई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो कैसे करूं? This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. There's bound to be a map to the symbol. ये सभी सिंबल है, ये ओपन होता है। चलो पहले इसको ओपन करते हैं। नीचे इस साइन का ये है, ऊपर है। मेरे को थोड़ा गेम का ब्राइटनेस बढ़ाना, दिख नहीं रहा बेसिकली अंदर हमें। ब्राइटनेस किधर गया? चलो अब आराम से दिख रहा है। ऊपर का ये था ओ और ये मून साइन का है और नीचे ए। Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. इसको करना होगा। Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. By the way, अब इसको कैसे solve करूं? चलो पहले वो वाला सॉल्व करके आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस गेट पे दिखाता है। ये क्या चाहिए? पर तो बुल टाइप का फेस का कुछ लगता है और नीचे बेसिकली जेड टाइप। ये वाला तो ये है। That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work.
Not sure references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. चलो अब इसको ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के लिए नीचे ये पिरामिड साइन का कुछ है, ये टाइप का, और ऊपर है ऑक्टोपस। बेसिकली We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not Revelio. be obvious which leads where. भाई ज़्यादा ही वाइड लग रहा है प्राइड निर्वाणा के बाद। तो कोई चारा भी नहीं है, तो दिख नहीं रहा था ना सामान। भाई इसको सेल करके बहुत पैसा मिल जाता, दूसरा भी रहने नहीं देते, बाद में सेल जब करेंगे ले लो। तो ऑक्टोबस ये वाला Not the welcoming sort, was he? Well, nicely done. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell.
It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. चलो गाइस, एक नया मैजिक अनलॉक होगा, क्रूशियो। लेट्स Ready? I'm ready. Crucio! Well, I think it's worth. Okay, nice. काम कर गया। Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Scriptorium. I can't believe we're here. Protego! डिफेंडर का लोगो लाइक डिफेंडर का लेवल 2 वाला लगा। तो सही तो है। और कुछ हटा देते इसके साथ आउटफिट अच्छा लगेगा, और डिफेंस पावर भी ज़्यादा है। अभी के लिए तो होल्ड कर हटा दिया। देखते कुछ अच्छा है, फिर से एपिक वाला सामान दे दे तो सही होगा। Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. चलो अब थोड़ा ब्राइटनेस को लो What's an करना honor? होगा। Still can't believe Ominous पजल never सॉल्व told me करने के about लिए his इसमें aunt देता है and what she ब्राइटनेस कर found. दिया। What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. चलो हमारा काम तो फिलहाल हो गया। अच्छा, हम इधर से भी निकल सकते हैं। वेरी नाइस, लेट्स गो। I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian.
वार्तालाप बहुत सही लग रहा है I भाई। meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. चलो बेचारे को समझ में आ ही गया फाइनली। इसके साथ मेरा भी एक मैजिक अनलॉक हो गया। पहला मैजिक अनफॉरगेटेबल कार्ड्स। चलो अब हम इसको ट्राई करेंगे हमारा कॉम्बो के साथ। सर ऐड करते हैं, देखते हैं क्या था। अभी के लिए तो फिलहाल मैं बता देता हूँ इंसेंडियो को। प्लस पॉइंट भी मिला, उसको भी अपग्रेड कर लेते हैं लेवल का। क्विज तो फिलहाल एक काम करते हैं, स्क्वायर 8 रिकॉल विद द नेटवर्क, ये तो हम बाद में कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल रिमेनिंग क्वेस्ट होम रिक्वायरमेंट पे कुछ काम है वाला है। फायर एंड आइस डिपेंडो को अनलॉक करना होगा और ये भी अनलॉक कर रहा है। एक्वायर्ड ए जायंट पार्टिकल टोड विद द सैबना। इसलिए बेसिकली हमको रूम ऑफ रिक्वायरमेंट पे ही जाना होगा, तब ये दोनों अनलॉक होगा। ये उतना इम्पोर्टेंट सामान तो नहीं है, पर बोमार्डा आई थिंक इम्पोर्टेंट है। चलो अभी के लिए तो फिलहाल यही वाला करते हैं। कोई जितना दूर हो सके करेंगे, उसके बाद देखते हैं और कितना मेरे पास टाइम बचा है, वरना नेक्स्ट पार्ट या फिर अपकमिंग आज भी कर सकते। अभी ने देख ही लिया है कि ऑलरेडी हमने 3 प्रोफेसर अनलॉक हो गया है मेरा चेम्बर पे। तो ये वाला ट्रायल के बाद और एक ही बचेगा, उसके बाद आई थिंक मे बी फाइनल पे हम पहुँच। इसलिए हमको थोड़ा दूर जाना है, तो मैं इधर से जाता हूँ या फिर इधर से चला जाता हूँ। तो गाइस सब कुछ टीम कैसा लग रहा है मेरे को बताओ, और अपकमिंग गेम के लिए कुछ बताओ क्या अभी लेके आओ। और स्ट्रीम अगर अच्छा लगे तो कोई नया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे तरह और भी अपकमिंग स्टोरी हम लाएंगे। चैनल का जस्ट शुरू है अभी। Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? One invalid. I heard something. भाई साहब विंटर के टाइम रात में कितना बढ़िया लग रहा है भाई। Highwing, go! मैंने आई थिंक ये गेम क्रिसमस के बाद क्या उस टाइम में शुरू किया था, अभी तक खत्म नहीं हुआ भाई। मेरा प्लान था विंटर को पूरा विंटर के टाइम ही डिस्कवर करना, पर हो नहीं पाया था। ठीक है, I should Let's go! Come on, Highwing! डिस्काउंट नमा के। Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making,
at the expense of innocent creatures, undoubtedly. प्रो The लंच poacher करके आता spoke हूँ। of this ठीक area, है and भाई, I मैं thought भी if अभी we जाऊँगा। searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, देखते हैं। this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. कितना बढ़िया लग रहा है भाई देखो विंटर के टाइम। फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा हमको। A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. भाई सब कितना But बढ़िया why लग would रहा he है। think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. भाई इसका मान नहीं That's the सकता। third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? भाई सब बहुत ही सुंदर लग रहा है Down हॉगवर्ट्स। there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. This is utter nonsense. I've never heard such rubbish in all my life. Think I get more sense out तो of गाइस broadcast. अभी के लिए तो स्ट्रीम को इधर ही ख़त्म करते हैं। फिलहाल अपकमिंग स्ट्रीम बहुत ही जल्दी करूँगा और इसके बाद जैसे कि मैंने बोला है कि रात के टाइम पे भी स्ट्रीम करूँगा। फिलहाल 2 घंटे का स्ट्रीम हुआ, नो प्रॉब्लम। उसके बाद
से स्ट्रीम होगा और ये अभी भी कंटिन्यू होगा। स्टोरी तो अभी बहुत बाकी है, बहुत तो नहीं कह सकते पर बाकी है। तो फिलहाल तो अभी स्ट्रीम में इधर ही रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा निकलना है काम के लिए। इसीलिए, वरना मैं अभी BRB करके लंच करके फिर से कंटिन्यू करने का प्लान था। पर बेसिकली अनफॉर्चुनेटली सॉरी फॉर दैट कि आज नहीं हो पाएगा, और अपकमिंग स्ट्रीम में कंटिन्यू होगा। रात के टाइम होगा, नो प्रॉब्लम। कल परसों या फिर तरसों के सामने जो से मैं ज़रूर इसको फिर से स्ट्रीम करूँगा। का पार्ट 9 तो फिलहाल इधर ही ख़त्म करते हैं। पार्ट 10, 11, 12 जितना आए मैं फिलहाल तो कोशिश करो कि जितना जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि एक नया गेम से शुरुआत करने का प्लान है अभी। तो अभी के लिए गाइस फिलहाल इधर ही ख़त्म करते हैं। सबको वेरी मच थैंक यू, जिसने भी ज्वाइन किया है हमारे आज का स्ट्रीम को, लाइक किया है, कमेंट किया है, और कोई अगर नया हो तो जिसने सब्सक्राइब किया है। और सबको वेरी मच थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। मिलते हैं अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए सबको बाय गाइस एंड हैव ए गुड डे।